Good morning, students. Welcome to the second module of set theory. Yesterday we already learned something about set theory. Let's quickly have some recap of the previous classes, what we have learned yesterday. Yesterday we already covered what is a set. Let me write the definition first. Set is a collection of well-defined objects. So I already told you what do you mean by well-defined. Well-defined means those which can be defined. There should be a common property. That is the well-definedness of a set. And object means what we have collected. That is the objects. So I already gave you some example regarding set, such as set of natural numbers, that is denoted as capital N. Similarly, set of real number, that is denoted as capital R, and so on. So we already covered how to represent a set. To represent a set, there is two different methods, two different forms. First one is the roster method, and second one is the set builder method. That means a set can be represented in two different ways. First one is roster method, and second one is set builder method. So quickly revise something. Recall the one example of roster method. It is very simple. Let A be the set. You remember the set is represented, or we can write a set with the help of a brushes, two brushes, right? And the elements are separated by comma. I can write A, E, I, O, U, right? Is it a set? Yes, obviously it is a set because it is well defined. How? And we have taken here the collection of all English vowels of English alphabets, right? So that's why it is a set, and which can be represented as roster method or listing method. Another name is listing method. So one example of, I can write the same example in roster set builder format also. How to write this? See, we use X such that X is an English vowel. Okay, what is X? X represents the in general element. That means what we have taken here, that are nothing but the English vowels. ताମାନେ ଆମେ କହି ପାରିବା ଆମେ ସେଇ ସବୁ X गुडा को ए सेट भीतर नेचे जो X गुडा को कि गोटे गोटे इंग्लिश vowel माने कि A E I O U ताମାନେ एठी से गुडा को अछि. तो बेसिकली हमें कोन करे ना सेट बिल्डर फॉर्मेट रे रोस्टर फॉर्मेट रे जहा थिला जो एलिमेंट गुडा को थिला तारो कॉमन प्रॉपर्टी को ही हम एठी लिखि देछे, पूरा को लिखि देछे, राइट? देखो जंती कॉमन प्रॉपर्टी कोन थिला एठी सब गुडा का कोन नेचे कॉमन प्रॉपर्टी हैला जे माने समस्त हेले गोटे गोटे इंग्लिश vowel. तो सेटा कि हम लिखि जे ए माने समस्त को इन जनरल हम केमते लिखि परिबा x में नै गले हमें सही x गुडा को नेचे जो x गुडा को कि गोटे गोटे इंग्लिश vowel को दर्शाउछे, ठीक अछि? तो ये एकला बा गोटे एग्जांपल, राइट? अच्छा, काली गोटे होमवर्क दिया हितला. होमवर्क थिला कलेक्शन ऑफ all natural numbers less than 10. 10 रु सानो जेते सब गणन संख्या अछि तापर में लिखिबा. So is it a set? Yes, obviously it is a set. Why? Because it is well defined. How it is well defined? Because we have taken here the collection of all natural numbers that are less than 10. ताମାନେ से ଗୋଟେ common property मिलछि हमको, तो आगु ଗୋଟେ सेट हम करिला. तो ये सेट को लिखिया पे हमको बाकर केतरा होय छै? दुटा होय छै. फर्स्ट में हैला जदि हम रोस्टर फॉर्मेट लिखिबी
रोस्टर फॉर्मेट और मेथड जहाँ भी करेगा रोस्टर मेथड ये केमती लिखा जो आगे गोटे ना दे दबा लेट्स सपोज दिस इज सेट इज b इज रिटन एज को नेचुरल नंबर लेस देन 10 अछि वेरी सिंपल नेचुरल नंबर कोटा 1 अछि 1 लेस देन 10 2 is less than 10 3 is less than 10 4 is less than 10 5 6 7 8 9 10 तो 10 सा नंबर सेति पे हमें 10 को लिखने ठीक है तो b हला सही सेट जो सेट रे की अछि all natural number that are less than 10 we can write the same set in set builder format also how to write see b तो सेट बिल्डर फॉर्मेट रो फॉर्मेट टा केमति थाउछ ना गोटे x लिखाइ थे इन जनरल एलिमेंट लिखाइ थे सेठी x so x such that x is a natural number which is less than 10 simple easy देखो कौन लिखा था सेट बिल्डर फॉर्मेट को लिखबा पे हम कोन यूज करू जो कॉमन प्रॉपर्टी ता थाए ताको हम यूज करू कॉमन प्रॉपर्टी कोन अछि ना हम जो सब नंबर नै छे सेही सब नंबर गुडा कहले नेचुरल नंबर और लेस देन ताको ही भाषा में लिखि देले खाली एक्स्ट्रा कोन कर ना x सच दैट x ई जो टर्म ता थिला यही खाली गोटे एक्स्ट्रा आछला एबे टिके बुझी जाइतिबो जे केमति हम रोस्टर फॉर्मेट रे गोटे सेट को लिखुचे आ हम केमति सेट बिल्डर फॉर्मेट रे गोटे सेट को लिखुचे ये है सेट बिल्डर फॉर्मेट ओके बुझी जाइतिबो बोधे समस्त अच्छा आ गोटे एग्जांपल देखिबा तापर हम जे कि नुवा जिंस करिबा suppose a question is given like this then given a set see a set is given now it asks you write the given set in set builder form so as this set is given in listing method we have to write this set in set builder form so before writing the set in set builder form we should know about what is the common property that is present here right so find out the common property what is the common property see the set contains the words distinct words p r i n c a l does it make any sense perhaps not let's see but if I can write like this now it makes a sense how see we can recognize that this is the letter of a word principal so this set is nothing but if I am writing a as this is it wrong no it is not wrong see recall the definition what is the definition set is a collection of well defined object I'll left one thing here this is the well defined distinct objects distinct yesterday I showed a word that is distinct object का माने कोन देखो छी ना गोटे सेट जते बेला हम लिखू से सेट रे जो सब एलिमेंट गुडा को थाए ताको हमें बारंबार रिपीट करिबा बा न करिबा ते किछि माने न थाए रिपीटिंग ऑफ अ एलिमेंट व्हाइल राइटिंग अ सेट इज वर्थलेस तार माने किछि न थाए सेति पई मु एठी कोन करथि देखो एठी केतरा पी अछि एठी दीटा पी अछि 2 p's आर देयर 2 i's आर देयर राइट so instead of 2p and 2i I can use only one I and one P. That's why the original set was looking like this. Got it? So इस set को हमें actually ऐसे लिख पाएगा ये रहा ये सही है ठीक तो इस set को हमें ऐसे लिख देंगे तो अभी जଣା पड़ला जे इस set रे actually कौन अछि इस set रे कौन अछि ना इस set रे सही सब लेटर गुडा को अछि को लेटर ना ए लेटर गुडा को गोटे वर्ड जे कि प्रिंसिपल सही वर्ड रो अछि तो ई कॉमन प्रॉपर्टी को हमें सेट बिल्डर फॉर्मेट रे लिखिबा केते लिखिबा देखो ये लिखिबा सेट बिल्डर फॉर्मेट रे फर्स्ट टाइम कोन x है
X was that. What represent X? X represent the elements present in the set. X was that. X is the alphabets or the letters of the word प्रिंसिपल बुझिए तो ये जो ए सेट रे की अछि ना लेटर्स गुडा को अछंती को लेटर्स गुडा को अछंती ना प्रिंसिपल वर्ड रो लेटर्स गुडा को अछंती तो हमें केमि लिखिले x such that x is the letters of the word principal इजी बुझि गेला तो एठी गोटे जिंस हम सिखिले नोट गोटे जदी लिखिबा हम एठी गोटे जिंस हम सिखिले एठी repetition of objects in a set is prohibited or not required. Is not required. गोटे सेट जेतबेला हम लेखु जेतबेला ई जो ऑब्जेक्ट गुडा अछि ऑब्जेक्ट माने का कोछि ब्रासेस भितर जहाँ को हमें लिखुचे ताकू हमें कहचे ऑब्जेक्ट एगुडा को हमें कोन कहि परिबा ऑब्जेक्ट कहि परिबा और आपको एलिमेंट्स भी कहि परिबा और आपको मेंबर्स भी कहि परिबा ठीक अछि आई टोटल लगा कोन देला एक बार कोन देला सेट देला तो सेट ये ऑब्जेक्ट को रिपीट करबार अर्थ किछि नै गोटे ए को पांच थर लिखिबा जहा थर लिखिबा बेसी बुझा पड़छ ओके now we will study different types of sets. First comes types of sets. First comes what is empty set. What do you mean by empty set? Empty, you already know what is empty. Empty means which doesn't contain anything. That is completely without the objects, right? A thing without objects. That is the empty. So empty set means a set which do not contain any elements is called an empty set. बुझी होची माने कोन छै ना गोटे सेट हमें बनेले आ से सेट रे कोन छै ना किछि भी एलिमेंट नहीं तो एछि गोटे डाउट आछी जे फर्स्ट तो हमको कहला जे सेट हला एमती गोटे कलेक्शन जा भीतर के ऑब्जेक्ट थियो किंतु एबे को होची एमिति कलेक्शन जा भीतर ऑब्जेक्ट नाही ताले ताको हमें केमती कहै छै ए एम्प्टी सेट केमती आसेला so let me give you an example. I am writing a set. Let's suppose A be a set represented as x such that x is a natural number which is greater than 5 and which is greater than 5 and less than 6. So recognize in which format I am writing the set. This set is in which format? Set builder format, right? So first try to write the set in listing method. So can you write the set in listing method?
Or if you can write, then what we get the elements in this set. See, here x is a natural number which is greater than 5 and less than 6. That means we have to find all those values of x which are greater than 5 and less than 6, provided the x should be a natural number. माने एमिति का गणन संख्या गुडा को हमें बाहर करिवा जे 5 ठु बड़ हेतिबो आ 6 ठु छोट हेतिबो एमिति किछि संख्या को मिलिबो किछि भी मिलिबो we cannot get any number, any natural number which is greater than 5 and less than 6. That means in the set A itself we cannot write anything. We cannot write because there is no such number which are greater than 5 and less than 6. No such natural number, especially natural number. No doubt there is number 5.1. Okay, so let's see, students, what happened. Here we need to collect all those x which are natural number and which is greater than 5 and less than 6. But there is no such natural number which are greater than 5 and less than 6. That's why we cannot write anything in this set. So this set remain in this situation also. That means it is totally empty. We cannot write anything in the set. So this is an example of empty set. So this is the perfect example of empty set, and to denote the empty set mathematically, empty set is denoted as either this empty set, the set which doesn't contain anything, or we can use another symbol, that is a 5. This symbol is called 5, right? Okay. So this is all about your empty set. So let's do one more example regarding empty set. Let B be any set where x such that x square is a negative integer where x is any natural number. So what we did here, we are collecting all those x whose square is a negative integer. That means if I take any, we need to find those x by squaring it, we should get a negative integer. Can it possible? Can we get any such x whose square is negative? No. So that means this set is in set builder format. If I write the set in set roster format, so I don't get anything. That means the set remain empty. So this is an example of empty set again, right? Okay. So this is all about your empty set. You can make many more examples of this empty set. For example, another example also that like there is a collection of all natural number less than 1. This is also an empty set because the natural number set contain the elements those are greater than 1. That is 1, 2, 3, 4 and etc. So natural number set doesn't contain any number which is less than 1. That's why this set is again an empty set. So let me write the set. Collection of all natural number which are less than 1. So if I name this set as C, this remains empty. We cannot write anything. C equals to empty or this equals to 5. This is also an example of empty set. Okay. Okay, now we should learn a new concept. Let us consider let A equals to 1, 2, 3, 4. This is a collection. Let's suppose this is a set. So what is the name of the set? The name of the set is A, capital A. And what is 1, 2, 3, 4? These are the objects or the elements or members of the set A. So I can say 1 is a member of the set A,
2 is a member of the set A, 3 is a member of the set A, 4 is a member of the set A. So mathematically, how to say that whether an element is a member or is present in a set or not? See, so that's why we use a mathematical term, that is belongs to. 1 belongs to A. This is termed as belongs to. Right? So can I say 5 is in the set A? No, 5 is not in the set A. So we can write 5 not belongs to A. This is termed as not belongs to. Got it? So 1 is belongs to A, but 5 is not belongs to A. Similarly, I can say that 2 belongs to A, 3 belongs to A, 4 belongs to A. Got it? So this is all about the positions of an element. So आम कहीपर जिते बड़े गोटे एलिमेंट सेट भितर रोचे ना रोना ताको मैथमेटिकली केमती रिप्रेजेंट करछे सेटा हम शिखिले जो जदी गोटे एलिमेंट गोटे सेट रे अछि जेमति कि धरनिया जो एक गोटे एलिमेंट अछि से सेट भितर अछि से सेट रो गोटे ऑब्जेक्ट बा सेट रो गोटे मेंबर तो आम कहि परिबा 1 इज बिलोंग्स टू A. Similarly 2 मध्ये सेट भितर अछि तो आम कहि परिबा 2 इज बिलोंग्स टू A, 3 is belongs to A, 4 is belongs to A. किंतु धरनिया जो 5 कोन ए सेट भितर अछि कि 5 टा सेट भितर नाही तो आम कहिबा 5 is not belongs to A. 5 टा ए सेट A मध्ये नाही. ठीक अछि. अच्छा तो आम टाइप्स ऑफ सेट पढुले से भितर प्रथमे आस्थिला हमर एम्प्टी सेट बा जाको हम कहउछे ओदिरा शून्य सेट. ठीक अछि. So this is all about your empty set. जो सेट रे किछि भी एलिमेंट नथिबो सेही सेट को हम कहउछे एम्प्टी सेट. एबे देखिबा गोटे नोआ टाइप रो सेट आसिला सी आसिला सिंगल टर्म सेट. सिंगल टर्म सेट हम का कहबा सिंगल को टिके टिके आईडिया आस्तुबो ना सेठी कोन हेतु ना गोटे ही एलिमेंट थिबो. एक्जेक्टली ठीक. तो एमिति का सेट जो भितरे कि केवल गोटे ही एलिमेंट थिबो ताको हम कहउछे सिंगल टर्म सेट. दैट मींस a set which contain only one element is called a single term set. Okay, for example, this is a single term set. This is a set and it contains only one element, that is 1. I can write this also. This is a single term set. This is a single term set. This is a single term set. Okay, let's see, you have a challenge. Can you write this set in set builder format? As this set is in listing format or roster format, can you write this set in set builder format? Try to write. See how to write. Let A equals to this. It is in roster format. See how to write this set in set builder format. X such that X equals to 1, where, or I can, it is better to write X is a natural number equals to 1. Okay, so X such that X is a natural number equals to 1. कहीं केमती लिखा गला A सेट रे की अछि गोटे एक ही अछि एकटा गोटे कोन नेचुरल नंबर गणन संख्या तो हम लिखि परिबा A सेट रे की अछि ना A सेट रे सेही सब X अछि जो कि गोटे गोटे नेचुरल नंबर जे कि 1 सहित समान. तो को नेचुरल नंबर 1 सहित समान एक निजे ही 1 सहित समान तो A रे की रहइबो एक ही रहइबो. तो ये थिला हमर लिस्टिंग मेथड, ये हला हमर सेट बिल्डर मेथड. बुझी पारलो बेले. तो सिंगल टर्म सेट को हमें केमती लिखुचे, व्हाट इज सिंगल टर्म सेट, हाउ टू रिप्रेजेंट इट, and these are the some example of single term set. Okay, let me write some more example about single term set. Let us consider C.
such that x belongs to n, comma x minus 1 whole square equals to g. See, this is a set. The set is written in which format? Is it in listing format? No. This is in set builder format. How you will get to know that whether this set is in listing method or set builder format? It's very simple. Since we have written here x such that, in this format is useful in just set builder format. That's why clearly this set is written in set builder format. Okay. So गोटे सेट तुमको सेट बिल्डर फॉर्मेट रे दिया है आपको लिखिबा हम काहे लिस्टिंग फॉर्मेट लिखिबा देखो केन लिखिबा तो एठी कोन करला सी सेट रे the set C contain all those x where or such that x belongs to n, that means x is a natural number and x minus 1 whole square is equals to 0. ता माने कोन ता माने हैला जे C रे सेही सब x गुडा को अछि जो x गुडा को की नेचुरल नंबर रो आसी छै आ सेही x गुडा को एई कंडीशन को सैटिस्फाई करछि माने से x को जदि मु आने की एठी पुट करबी ताहले x 1 रो होल स्क्वायर ता केते आसीबा दरकार 0 आसीबा दरकार ताहले को सब x गुडा को अछि जा पई x 1 रो होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होबो एमती किछि x अछि जा पई x 1 रो होल स्क्वायर सॉरी x 1 रो होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एमती किछि x अछि हम पाखे अछि निश्चय अछि कि से x हला if x is equals to 1 then x minus 1 whole square is equals to 0 हाउ ता माने एठी x की हला नै को x मिलला हमको खाली गोटे ही x मिलला के सेटा ओनली 1 ता माने जदी मु आपको लिस्टिंग मेथड लिखिबी त ए सेटटा बे कोन हिबो c रे की रहइबो ओनली 1 ही रहइबो बुझा पछी ना ता माने c टा कोन हिला सिंगलटन सेट हिगना क्लियर ता माने c टा कोन थिला x such that x belongs to n x minus 1 whole square is equals to 0 एबे कोन मिलला त ये तेरा सेट बिल्डर फॉर्मेट रे आपको जेते बडा लिस्टिंग रे लिखिले ये कोन हिला c equals to 1 ए सेट रे केवल गोटे ही एलिमेंट अछि सो दैट्स व्हाई वी कॉल दिस सेट एज सिंगलटन सेट बुझे गेला ये गोटे भलो एग्जांपल थिला अच्छा एबे गोटे टास्क अछि राइट इन क्वेश्चन try to solve this question after this class. Okay, this is your homework. See, it's given x such that x belongs to n where x square minus 1 is equals to 0. This set is in set builder format. Try to write this set in listing method and find out whether it is a singleton set or not. Remember what is given? It is given you a set which contain those x which x are belongs to the set of natural number and those x should satisfy this condition, that is x square minus 1 is equals to 0. You have to find those x provided the x should be natural number. Okay, try to solve this question. If you have any doubt then I will tell you tomorrow. Okay, next we are going to see that is a finite set. So we already learned what is empty set. Now we have learned what is singleton set. Now we are going to learn what is finite set. Finite set. Okay, what is finite set? Finite means what? That which can be countable. That means a set which contain a countable number of elements. The set is called finite set. Let me write the definition first. The set which contains a finite number of elements. A finite number of elements. That means what? Finite number of element means that is the elements should be
countable and terminate at an end. That means what? Let me give you an example. See, A be a set A, E, I, O, U. That means it is a set of all English vowels. Can you count the elements? How many elements are there? Yes, we can count. This is first element, this is second element, this is third, this is fourth, this is fifth. That means the set contains 5 number of elements. So, as we can count this set, that's why this set is called finite set, because the definition itself tells us the set which contain a finite number of elements. What do you mean by finite number? Finite number means that is the elements should be countable and terminate at an end. That means we should count them and it should stop at an end. माने कोन देखो अर्थ होला जे आमे कोन करि परिबा जो सेट रो एलिमेंट गुडा को गणि पारतो किंतु से कोन होतो किछि समय पर जेंति रहि जातो माने गणिबाटा एमति चलीबनी कंटिन्यू रहिबनी से जेंति सरी जिला दरकार ताले सेई टाइप रो सेट को आमे कहिबा काउंटेबल सेट और दिस इज कॉल्ड द फाइनाइट सेट नॉट काउंटेबल सेट दैट इज द फ्रॉम फाइनाइट सेट देखो कि आ गोटे एग्जांपल अछि भलो एग्जांपल छै n what is n is the set of natural number that is 1 2 3 4 5 6 and dot. So can you say that this set is finite? See, finite set रो definition कोन कहूची ना जोगडा को हम गणि परिबा केमति कहतिला the element that should be countable तो आको में तो गणि परिबा येला 1 येला 3 येला 4 5 6 एमति तो हम गणि परिबा बट ई गणि गणि हम केते गणि परिबा ये तो चाहि थिबो एमति ये तो केबे सरू नहीं बुझा छ नै तो सेति पे कहला गणि पारछुले मध्ये से कोन तो दरकार टर्मिनेट एन एंड माने गोटे जगह रे से सही जातो दरकार otherwise आमे ताको फाइनाइट सेट कहि परिबा नै so that's why n of the set of natural number is not finite. So this set is not finite. Clear? तो सेति पे आमे आको फाइनाइट सेट बोली कहबा नाही. Whereas आमे जदि आ गोटे सेट नेबा b जो भी का करथिला आमे सपोज आमे रखिले 2 4 6 8 10 ये को हमें फाइनाइट बोली कहबा काहे फाइनाइट बोली कहबा देखो जेतु एको हम गणि परछे फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट अछि आ जो गणिबा प्रक्रियाटा किछि समय पर सरी जाउछि पांचटा ही एलिमेंट इठी अछि ता परे ओ एलिमेंट नाही तो सेति आगो हम कहले फाइनाइट ता माने जे सबुठी पांचटा एलिमेंट रहले ताको फाइनाइट कहबा पांच रो दिए रहि पारे जोटी 10टा रहि पारे 6टा रहि पारे 200 रहि पारे बट से सरी जाउथो दरकार गणिबा प्रक्रियाटा ताको हम फाइनाइट नंबर बोली कहबा और फाइनाइट सेट बोली कहबा बुझा पड़छि. अच्छा नाउ दिस इज आल्सो a question for you. Question number. Write the set in write the set in set builder format. Can you write this set in set builder format? Set builder format of come we have to look about the common property that are used to write the elements. What is the common property that I am using here to write the element? See, the common property is all the elements are even number. Besides, or along with that, these numbers are all the even numbers are less than or equal to 10. It is not exceeding 10. So this is a hint for you. Okay, the hint is numbers are even and second hint is numbers are less than 12. Okay, try to write the answer using this two hint. Okay, this is of your different types of sets. Okay, so what we learn. Okay, so हमें कौन पढ़िले फर्स्ट हमें पढ़िले कौन पढ़िले जे फर्स्ट हमें पढ़िले एम्प्टी सेट
तापर हम पढ़ले सिंगलटन सेट तापर हम पढ़ले फाइनाइट सेट एबे गोटे नुआ फर्स्ट कांसेप्ट पढ़िबा दैट इज ये तीनटा जे हम पढ़ले मु आउची या भितर किछि डाउट नथिबो एम्प्टी सेट माने का कहले जो सेट रे किछि भी एलिमेंट नथिबो द सेट व्हिच डजंट कंटेन एनी एलिमेंट दैट इज द एम्प्टी सेट सिंगल टोन सेट का कहले द सेट व्हिच कंटेन only one element that is called the singleton set finite set का कहले the set which contain finite number of element or those number of element which can be countable and end set on point or terminate on end ताको हम कहउचे finite set जाको हम गणि परिबा बट से गणिबा प्रक्रियाटा किछ समय पर जेंति सही रहथवा दरकार तार गोटे परफेक्ट एग्जांपल थिला सेट ऑफ नेचुरल नंबर में एलिमेंट गुडा हम गणि परछे 1 2 3 4 एमति हम तो गणि परिबा बट से सरी होनी केबे भी तो सेति में ताको हम फाइनाइट कर देबे ठीक अछि तो ए तीन ना पढिबे एबे गोटे नुवा जिंस पढिबा दैट इज कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट cardinal number of a set ये कौन होची so the cardinal number of a set is basically a number ये एक्चुअली कौन ये गोटे संख्या के बुझौछ गोटे नंबर it is a number and how to get that number this number is nothing but the number of elements present in a set माने गोटे सेट रे जेतेटा एलिमेंट अछि ताकू हम कहउछे cardinal number of a set for example let me take an example it's very well known example that is a e i o u this is a set everybody know this is a set of English vowels and it is in listing format, right? So how many elements are there in this set A? The set contains 5 number of elements, first, second, third, fourth, fifth. Okay, so that means this set A has cardinal number A. That means A has cardinal number 5. Mathematically, it can be denoted as like this mod A. Mod A means cardinal number of A or the cardinality of A. Mod A or this can be written as n of A. N of A means also the cardinality of A and this is equals to what? In this case for this question it is equals to 5. Let me take another example. B equals to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So can you find the cardinal number for this set B? It's very simple. How to write this? Mod B. So for cardinality we use this symbol mod A or n of A. You use whatever you want. In some book it is given as mod B. In some book you will find it is as n of A. So mod B is equals to how many elements are there? 10 elements are there. 1, 2, 3, 4, 5, 6 up to 10 elements are there. So it's quite simple. So let me give you another example. X be a set. It is going to be tough for you. See, X is that X belongs to R. Can you find cardinality of X or the set X contain how many number of elements? It's quite simple. See, don't confuse by seeing this question. The question tells us the set given set is X equals to X such that X belongs to R. That means the set contains those X where X are from a set of real number. And satisfying this condition ए सेट रे से सब एलिमेंट गुडा अछि बा से सब x गुडा अछि जो x गुडा कि कोठु अछि r रो अछि r माने सेट ऑफ रियल नंबर अछि आउ से सब x गुडा कोन करथि ना ए जो कंडीशन टी दिया अछि जो इक्वेशन टी दिया अछि ए इक्वेशन टी को सैटिस्फाई करथवा दरकार सो आवर फर्स्ट जॉब इज टू फाइंड दोज वैल्यूज ऑफ x फॉर व्हिच this RHS is equals to RHS. That means we have to write the set in listing format. Then only we can able to count the number of elements that are present in the set. ता पर जे का गणि परबा नॉलेज स्टेट वेक्टर फॉर्मेट रे हम केमति जानिबा ता भीतर केतेटा एलिमेंट अछि
तो जते बेले भी क्वेश्चन टा सेट बिल्डर फॉर्मेट रे देथिबो आ तुमको पचारथिबो जे तार कार्डिनलिटी केते बा कार्डिनल नंबर केते, तो फर्स्ट स्टेप इज यू हैव टू कन्वर्ट द क्वेश्चन और कन्वर्ट द सेट इनटू लिस्टिंग फॉर्मेट, देन ओनली यू कैन एबल टू काउंट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स. So first try to write the set in listing format. So to write the set in listing format, we should have to know what are the values of x for which this equation is satisfied. That means the values of x for which LHS is equals to RHS. ता माने हला आमे एंती को x गुडा को आनी केठी पकेबा बा x रो वैल्यू हमें केते नेबा such that x² - 2x + 1 is equals to 0. केमति जानिबा एंती ताको हमें कहूचे हम पढिथिबा the root of the equation कोन नै x² - 2x + 1 is equals to 0. ता माने हम कोन करबा एठी एई इक्वेशन रो आगे रूट गुडा को बाहर करबा, जो रूट गुडा को आसीबो सेही एलिमेंट गुडा को एठी थिबो कोन नै ताको सॉल्व करबा. अच्छा ये देखियो का भले देखा जाउची x² - 2x + 1 is equals to 0. मने थिबो पिले एठी होची x - 1 रो होल स्क्वायर कोन नै x - 1 होल स्क्वायर केते आसीबो x² - 2 * x + 1, so this is equals to 0. so that implies ये कौन है गया x - 1 into x - 1 is equals to 0. so that implies x is equal to 1, ता माने जेतु ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रो केतरा रूट मिलिबो, दीटा रूट मिलिबो. क्वाड्रेटिक माने जहार जो इक्वेशन रो सर्वोच्च घात बा पावर, द इक्वेशन whose greatest power of the variable is equals to 2, that is called the quadratic equation. और आमे समस्त जानि जे क्वाड्रेटिक इक्वेशन रो दीटा रूट मिले, ता माने दीटा वैल्यू मिलिबो. कौन से दीटा वैल्यू मिलला सेम ही मिलला 1 और 1 मिलला. ताले याको एबे हम कोन करबा देखिबा जे ए जो x टा मिलला ये गोटे रियल नंबर ना नहीं, यस इट इज रियल नंबर, 1 इज रियल नंबर. ता माने देखो जिनसोटा केमि क्लियर होची x तो हम कोन कहितला ए जो सेट x अछि कैपिटल x, ओके कैपिटल x सेट रे की अछि ना से सब x गुडा को अछंती जो x गुडा के रियल नंबर रो आछंती आ जो माने ए सेट ए कंडीशन को सैटिस्फाई करछंती. तो फर्स्ट हम कोन करले को x गुडा को ई कंडीशन को सैटिस्फाई करछि ताका हम बाहर करले. हमको के मिलला हमको मिलला 1, दीटा 1 मिलला. तो बेसिकली दीटा जाको 1 तो सेम. तो एबे चेक करले जे जो 1 मिलला से रियल नंबर अछि ना नहीं, यस 1 बिलोंग्स टू r कोन नै त माने इट ट्रू. ताहले 1 टा वैल्यू x हे परिबो नै बा x रो वैल्यू 1 हे परिबो नै, निश्चय हे परिबो. ताहले हम एठी केमि लिखबा से बोली लिस्टिंग फॉर्मेट में लिखबा 1 लिख देबा कोन नै. किंतु मने पकाओ तुमको गोटे नोट मु डाकिथिली द रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट व्हाइल राइटिंग ए सेट इज नॉट अलाउड और इट इज वर्थलेस. ता माने गोटे सेट एलिमेंट को सेट रे बारंबार जदी लिखिबा त माने ही किछि नै. ता माने इको दिथरो लिखिबा बदल रे हम थोड़ा मध्ये लिख परिबा. ता माने केते आसीला 1 आसी गेला. त यार कार्डिनलिटी केते आसीबो, कार्डिनलिटी आसीबो 1 बुझा पड़ला. कार्डिनलिटी आसीबो 1. क्लियर ओके. ये सला हमर कार्डिनलिटी एबे आ गोटे मानन से पढिबा सेला इक्विवेलेंट सेट. इक्विवेलेंट सेट बोलिया का कहै इक्विवेलेंट माने कोन सदृश माने को सेटटा मतलब जदि दीटा सेट अछि तले हम दीटा सेट को इक्विवेलेंट केते बळे दियो. इक्विवेलेंट माने सी जेंति देखिबा को आ गोटे बळे हिथिबो ता बळे सदृश हिथिबो कोन नै. तो लेट a and b b2 नॉन एम्प्टी सेट. आमे कोन करछ दीटा नॉन एम्प्टी सेट निचे. नॉन एम्प्टी माने ताकरे किछि एलिमेंट अछि, ठीक अछि. a और b दीटा नॉन एम्प्टी सेट निचे. देन these two sets a comma b are said to be equivalent if mod A is equals to mod B. That means the cardinality of set A is equals to cardinality of set B.
तमार कोन होला देखो जदी दुईटा सेट रो कार्डिनलिटी जदी समान हे जाय ताला हमें से दुईटा सेट को कोन बोली कहबा द सेट A एंड B आर इक्विवेलेंट बोली हम कहबा इक्विवेलेंस बोली हम कहबा ठीक अछि फॉर एग्जांपल गोटे सेट A नि जिबा A B C तीनटा अल्फाबेट अछि आ गोटे सेट नै जिबा B A हला गोटे सेट B हला गोटे सेट A रो कार्डिनलिटी केते mod A equals to how this is equals to 3 because there are 3 number of elements 1 2 3 number of element similarly mod of B केते आसीबो mod of B मध्ये आसे लागे 3 so here mod A is equals to mod B दुडे जाक केते आसे 3 आसे तो सेति बा कोन कहि पाइबा A is equivalent to B माने A सेट ता देखिबा को जेमिति का है B सेट ता मध्ये देखिबा को सेम दिखाइ छै माने इट इज ऑल अबाउट योर साइज ऑफ द सेट A सेट रो साइज जेते B सेट रो साइज मध्ये सेति ही अछि तो सेति पे हमें कोन कहला जे ए दुटा सेट को हमें कोन बोली कहले इक्विवेलेंट सेट बोली कहले बुझा गला सेति हमें डिफरेंट एग्जांपल्स नै परिबा ठीक अछि if you would invite us Swastika, that is equal set एबे हम पढिले इक्विवेलेंस सेट एबे हम देखिबा इक्वल सेट सेमति हम दुटा सेट नवा लेट A, B the two sets ब्रैकेट में लिखि दिए इट इज नॉन एम्प्टी सो केतरा सेट नि आइछि दुटा नॉन एम्प्टी सेट नि आइछि ठीक अछि A और B को दुटा नॉन एम्प्टी सेट नि आइछि माने ता भितरे किछि एलिमेंट अछि ठीक अछि नाउ two sets A, B are said to be equal if they contain the same elements. That means what? The element that are present in set A is again present in set B, then we can say that these two sets A and B are equal. See, for example, there is set A which contains 1, 2, 3. B is also again contain 1, 2, 3. That means every set or every element of the set A is again present in the set B. 1 भी अच्छी है, 1 B रे भी अच्छी, 2 अच्छी है, 2 B रे भी अच्छी, 3 अच्छी है, 3 B रे भी अच्छी. ता माने A सेट रे जो जो एलिमेंट अच्छी, से सब एलिमेंट से प्रत्येक एलिमेंट आउ को सेट रे अच्छी, B सेट रे भी अच्छी. अच्छी ना? तो सेति पे हमें कोन बोली कहि परिबा ना ये जो दुटा सेट A और B सेट को हमें इक्वल बोली हमें कहि परिबा. बुझा पड़छे? तो आको हमें लिखु छे A और एठी लिखि दी परिबा हमें hence A is equals to B. ठीक अछि. आ ओते एग्जांपल लेके देखिबा जे इक्वल सेट हमें केतोल कहबा two sets are said to be equal when they contain the same elements. ठीक अछि. गोटे एग्जांपल आ देखिबा C गोटे सेट X such that X belongs to R and X square minus 1 is equal to 0. C is a set which is written in set builder format. D is another set which contain plus 1 and minus 1. Okay. So my question is, I can say, can I say C is equals to D or not? माने C टा D से तो समान ना नहीं चेक करबा पड़िबो होना नहीं तो केमती चेक करबा तो फर्स्ट काम होला आगे देखो जे C सेट टा को केमती लिखा है the set C is written in set builder format so first we have to write the set into listing format then only we can recognize whether it is equal or it is not so our first job is to write the set C in
listing format. So how to write the C in listing format? See, C set tells us the set C contain all those x where x is from set of real number and those x satisfy this equation, that is x square minus 1 is equals to 0. That means we have to find the values of x which are real number and satisfy this condition, right? So C set को जब हम लिखिबी त C set रे की रहबो को वैल्यू गुडा को पई को x रो को वैल्यू पई x स्क्वायर माइनस 1 is equals to 0 हो x रो दीटा वैल्यू पई 0 हो गोटे ला 1 और ला -1. It's quite simple. As x square minus 1 is equal to 0, that implies what? X square is equal to 1. That implies x is equals to plus minus 1. तामने ठीक है ला C set 1 और -1 मिला. And clearly the elements which are present in set C is also present in set D, as you see 1 is in C, again 1 is in D, minus 1 in C, again minus 1 is in D. So that implies we can say that C is equal to D. It's quite easy. So this is your equal set. Now another concept is there, that is subset. So before going to subset, some questions for you. A set is given, that is a x such that x belongs to R, where x square plus 2x plus 1 is equals to 0. Another set B is given, x such that x belongs to R, x is greater than 0, make it as x belongs to n, x greater than 0 and less than 5. Okay, so these two sets are given in set vector format. Okay, so your job is to first convert the set into listing format, then check whether A is equals to B or not. Check either whether A equals to B or not. Okay, this is the homework. See, now comes to subset. What is subset? I hope you already read the question. What is subset? See, suppose two sets are there. Let A and B be two sets. Then A is called subset of B if every elements of A are present in B. तो माने कौन होला देखो बुझो ठीक सपोज हम पाखरे कोन अछि ना दिला सेट अछि गोटे सेट हला A आ गोटे सेट हला B. तो मु कोन कहली A को B रो सबसेट कहबी. A is called subset of B. केते बेले कहबी if every element of A is present in B. माने कोन होला ना जल्दी A रो सब एलिमेंट प्रत्येक एलिमेंट A रे जेतेटा भी एलिमेंट अछि से तीटा थाउ चारटा थाउ पांचटा थाउ जेतेटा भी थाउ A जहां भी एलिमेंट अछि से संपूर्ण रूपे कोठ थिबा दरकार B रे थिबा दरकार. ताले कि मु कोन कहि परबी A is a subset of B and mathematically it is denoted as A subset B. That means A रो प्रत्येक एलिमेंट कोठी अछि B रे अछि. गोटे एग्जांपल नै बुझिबा.
गोटे एग्जांपल ले जिबा ए रे हम का रखिले ए रे हम रखिले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 ओके बी अगेन गोटे सेट है बी सेट रे हम रखिले 2 4 6 8 10 ओके अच्छा मते कहो जे को सेट रो एलिमेंट गुडा को सेट भीतर अछन जदि हमें देखिबा ये तीनटा सेट भीतर बड़ सेटटा कोटा ए सेटटा बड़ काई बिकॉज़ इट कंटेन मोर नंबर ऑफ एलिमेंट्स सिंस इट modulus is also greater than mod of b. What is mod of a? Mod of a is equals to 10. That means the set a contain 10 number of elements. What is mod of b? Mod of b is equals to 5. The set b contain 5 number of elements. So देखिबा जदि कोन जणा होची छि ना सेट b रे जते सब एलिमेंट अछंती ये सब एलिमेंट कोटे अछंती a सेट रे भी अछंती केमति देखो 2 is belongs to b. The 2 is an element of b. Again 2 is also an element of a. 4 is an element of b. Again 4 is an element of a. So 2 b element achi. 4 is also in a. 6 is also in a. 8 is also in a. 10 is also present in a. ता माने कोन हला ना b सेट रे जते सब एलिमेंट अछन प्रत्येक एलिमेंट जो भी एलिमेंट को तमे नै जावछि से सब एलिमेंट कोठी छै कि a सेट रे अछि तो आम कौन पढ़ी जदि दुईटा सेट भितर गोटे सेट रो सब एलिमेंट जदि आ गोटे सेट रे रही जिवो ताला आम कोन बोली कहबा सबसेट बोली कहबा तो एठी की करा सबसेट हे गेला हियर वी कैन से दैट b इज सबसेट ऑफ a नॉट a सबसेट ऑफ b a को हम b रो सबसेट केते बोली कहथांते जदि a रो सब एलिमेंट b रे थांता किंतु एठी कोन हे तार उल्टा हे जायछि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ b आर प्रेजेंट इन a दैट्स व्हाई वी कैन से b इज सबसेट ऑफ a तो देखो एठी दीटा डिफरेंट सिंबल को यूज करली गोटे ए टाइप ऑफ सिंबल यूज करली आ गोटे ए टाइप ऑफ सिंबल यूज करली ठीक अछि या कोन कहबा जे दिस सिंबल इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट प्रॉपर सबसेट रो अर्थ कोन ए दीटा भीतर डिफरेंस कोन अछि ए दीटा भीतर डिफरेंस है एठी गोटे देखो तळे गोटे गाल दिए छी ई कहू छै सबसेट और इक्वल्स ताने ए दीटा सेट कोन हे परले सबसेट भी ही परबे इक्वल भी ही परबे चिंता करो जदि दीटा सेट इक्वल भी ही गला तार हम कहि परिबो नै जे एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A इज आल्सो प्रेजेंट इन B लाइक इक्वल रो डेफिनेशन भी सेट अछि दैट मींस इफ टू सेट्स आर इक्वल देन वी कैन से दैट दे आर सबसेट ऑफ ईच अदर सो लाइकवाइज सो फॉर दैट रीजन वी यूज दिस सिंबल एज सबसेट और इक्वल बट फॉर द प्रॉपर सबसेट वी यूज दिस सिंबल प्रॉपर सबसेट अर्थ कोन ना B सेट ता पूरा पूरी A सेट रे रहि जाउची एंड द सेट A कंटेन मोर देन elements of B. That means A set must be contain some elements which are not in B. देखो A रे एमती भी किछि एलिमेंट अछि जोटा कोठी नै B रे नाही जेमति फॉर एग्जांपल 1 अछि 3 अछि 5 अछि 7 अछि एंड 9 अछि बुझा पड़छि तो सेही केस रे हमें कोन कहबा B is proper subset of A. जदि B A रो प्रॉपर सबसेट हे गेला तो आको एमती मध्ये लिख पारे A सिंबल टा को बुले देबी एमती भी लिख पारे ना B सबसेट A थिला मु ताको एमती भी लिख पारे एंड दिस सिचुएशन इज कॉल्ड A इज superset of B. That means A जदि B रो सबसेट हैला तार को कोन कहबे B को A रो सुपरसेट बोली कहबे बुझा पड़छ ओके आउ किसी एग्जांपल ना let us consider the set A as 1 2 3 4 5 and set B as 1 2 6 7 8. So can I say A is subset of B or B is subset of A? Check when we can say that a set is subset of another set if every element of a set is present in another set. So let's take consider the set A and consider the element 1. 1 is a member of the set A or 1 is in set A. Can 1 is in B?
Yes, 1 is in the set B. What about 2? 2 is a member of A. Again 2 is a member of B. Okay. Now consider 3. 3 is a member of A. Can 3 a member of B? No, 3 is not a member of B. So that means from here onwards there is no need to proceed, and we can clearly write here A is not a subset of B. That means every element of A is not present in B. To be a subset, remember one thing, every member of the set should be present in another set. Then only we can say that A is a subset of B. But here only 2 elements are present in the set, and except these 2, none of the elements are present in this set. That's why these 2 sets are not subset. That means we can say that A is not subset of B, and likewise B is not subset of A also. Clear? Okay. Okay. Now it's the time for homework. Write the question. I am giving you a set A. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Write any 3 subsets of A. Okay, a set is given. You have to find any 3 subsets of A. माने एमती के सेट गुडा को तमे लिखिबो तीनटा सबसेट जार प्रत्येक एलिमेंट कोड थिबा दरकार ए रे थिबा दरकार ए रो तीनटा सेट में बाहर। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमर जदी तमे एमती बाहर करि पारिबो how many subsets of A are possible। आमे जदी एमती सबसेट गुडा को बाहर करिबा ए रो तो मैक्सिमम केतेटा सबसेट बाहर करि पारिबा केतेटा सबसेट ए सेट रो हम बाहर करिबा। ठीक अछि, ए दुटा क्वेश्चन ट्राई करो भाबछु तमार करि पारिबो ट्राई करो। ये ला चैलेंजिंग क्वेश्चन केतेटा सबसेट हम बाहर करिबा बाहर करो। ठीक अछि, ओके थैंक यू।